Quran. Chapter 2. Verse 136. Translation by Dr. Shabbir Ahmed. Florida, USA. Two 136. O you who have chosen to believe, say, we believe in God, and the revelation that has been given to us, and the surviving truth in what was sent down to Abraham, Ishmael, Isaac, Jacob, as well as the tribal Israelite prophets, and in what was given to Moses and Jesus and to all prophets from their sustainer. We make no distinction among them, since all of them were one in purpose and they got their guidance from the one true God. And for him, we are Muslims. About my interpolation, the surviving truth, C2, 79, 2, 101, 3, 78, 3, 187, 548. A spot equals the prophets raised among the 12 Israelite tribes, frequently called the patriarchs. No distinction, equals all of them were commissioned by God and they were one in purpose, although their times and places varied. They were given the message emphasizing the social needs of their respective nations. Humanity is now able to receive the final revelation that embraces all truth and sorts out the human touch in the previous scriptures. C2, 75, 2, 78, 79, 2, 101, 3, 70, 71, 3, 78, 3, 186, 187, 513, 541, 6, 91, 931. No distinction also indicates that we do not deny some and accept some of the prophets named in the Quran. A misconception recently trying to hold grounds should probably be addressed here. It is God alone who is impeccable, and there is none like unto him. And no two human beings are identical in every respect. The apostles of God were made to excel one another concerning their specific duties relevant to the times and places of their advent. We have caused some of them to excel others, 253. But we caused some prophets to excel the others, 1755. However, they were all one in purpose, so we make no distinction among them on that account, and we do not accept some and deny some of them. 136 ए लोगो जिन्होंने ईमान की सादत हासिल की है, कह दो कि हम अल्लाह पर ईमान रखते हैं और जो किताब हम पर नाजिल हुई है और उन सहीफों पर जो इब्राहीम, इस्माइल, इसहाक, याकूब और उनकी औलाद यानी उनके बाद आने वाले अंबाई बनी इसराइल पर, और जो मूसा और ईसा और दीगर पैगंबरों को उनके रब से अता हुई। हम इनमें से किसी में फ़र्क नहीं करते, क्योंकि वो सब एक ही पैगाम लाए थे और हम सिर्फ अल्लाह जो अला वाहिद है इसके लिए सर तस्लीम खम करते हैं, फरमाबरदार हैं। दो 136 ए लोगो जिन्होंने ईमान की सादत हासिल की है, कह दो कि हम अल्लाह पर ईमान रखते हैं और जो किताब हम पर नाजिल हुई है और उन सहीफों पर जो इब्राहीम, इस्माइल, इसहाक, याकूब और उनकी औलाद यानी उनके बाद आने वाले अंबाई बनी इसराइल पर, और जो मूसा और ईसा और दीगर पैगंबरों को उनके रब से अता हुई। हम इनमें से किसी में फ़र्क नहीं करते, क्योंकि वो सब एक ही पैगाम लाए थे और हम सिर्फ अल्लाह जो अला वाहिद है इसके लिए सर तस्लीम खम करते हैं, फरमाबरदार हैं। قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. البقرة 136.